Hello, people. Welcome to today's class. Today, we are going to deal with the topic real numbers. So, what do you think a real number is? Real numbers are those numbers which consist of your rational numbers and your irrational numbers. Real numbers are just numbers like you have your 1, you have 12.38, you have minus 0.56, you have 1 by 4, you have pi, you have 186. In fact, nearly any number you can think of is a real number. When you check out what is real number, you will get to know what real numbers include and what does real number does not include. So without wasting any time, let's get started and check out what real numbers actually include. So friends, real numbers include our whole numbers, our natural numbers, our integers, our rational numbers, and our irrational numbers. You guys have the basic idea about all the types of numbers which are mentioned or displayed on the screen. So let us have a quick recap of all these numbers. The first one is your natural numbers. Now, bachcho, what is natural number? When someone asks you what is natural number, you always tend to tell that natural numbers are those numbers which are which include numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. This is our basic definition. But what are natural numbers? तो बच्चों जब भी पूछा जाए what are natural numbers, always remember one thing. Natural numbers are set of counting numbers. क्या है बच्चों? Natural numbers are set of counting numbers. They are denoted by the letter N. They are denoted by the letter capital N, and the set of series of numbers are 1, 2, 3 and continue till your infinity. This is called your natural numbers. ठीक है मैम, नेचुरल नंबर्स हो गया ना. व्हाट आर होल नंबर्स? तो बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर जस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस योर जीरो. इन होल नंबर्स यू हैव योर नेचुरल नंबर्स प्लस योर जीरो. बढ़िया मैम. फिर नेचुरल होल नंबर्स कैसे डिनोट किया जाता है? तो बच्चों होल नंबर्स आर डिनोटेड by the letter capital W, and the series or set of numbers which it includes is 0 along with your natural number continue till infinity. ये हो गया हमारा whole number. When you speak about integer, integers are nothing but बच्चों these are set of your whole numbers and its opposites. अब मैम ऑपोजिट मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव का नेगेटिव, ही का शी. इन द सेम वे पॉजिटिव होल नंबर्स का ऑपोजिट्स हो गया नेगेटिव होल नंबर्स. तो लिख लो बच्चों सेट -1 से माइनस इन्फिनिटी तक ले, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, इसे हम कहते हैं इंटीजर सेट. और इंटीजर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल Z. ठीक है बच्चों, आई होप यू आर क्लियर विद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू योर रेशनल नंबर्स. मैम अब ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो बच्चों मैं बता दूं, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. Any term or any number which is expressed in a fraction form is termed your rational number, and they have two integers a and b, and the condition is where b is not equal to 0. बढ़िया मैम. अब रेशनल नंबर्स हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं मैम? तो बच्चों मैं बता दूं, रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग योर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल. मैम अब ये होते क्या हैं? तो बच्चों एग्जांपल ले लो 0.7777. मैंने इधर आपको एग्जांपल दिया है जिसमें एग्जाम्पल है 0.777. इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट के बाद से जितने भी नंबर हैं, जो भी नंबर है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. देयर इज नो एंड टू द नंबर. ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो. You have your 0.63, 63, 63 and so on continued. तो अभी हम इसमें क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं? We observe that
636363 is keeping repeating itself and there is no end to the number. So this is your टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर. ठीक है मैम, बढ़िया. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों इरेशनल नंबर्स वो होते हैं which are opposite of your rational numbers. मतलब मैम, मतलब which are not expressed in the form of p by q or which cannot be written in a fraction form is known as your irrational numbers. ठीक है मैम, एग्जाम्पल ले लो अपना 0.741, you have your 0.5, you have your 0.4, you have your 0.31. Any number which is not repeating after the decimal units are termed as non-repeating or non-terminating decimals. अरे वाह मैम, आपने तो इसी में आंसर बोल दिया कि रेशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग non-terminating और non-repeating decimals. ठीक है बच्चों, I hope you are clear with what does real numbers include. Now we shall learn what does a real number does not include. देखो बच्चों, तो रियल नंबर्स क्या नहीं इंक्लूड करते हैं? रियल नंबर्स नहीं इंक्लूड करते हैं हमारा इमेजिनरी नंबर और हमारा इन्फिनिटी. इमेजिनरी नंबर्स मतलब मैम जो हम इमेजिन करते हैं विच आर नॉट रियल आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स ले लो लाइक यू हैव योर रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 ले लो, रूट ऑफ -9 ले लो, रूट ऑफ -5 ले लो. इनका जो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 5, 9 और 1 जो भी होता है दे आर नॉट रियल नंबर्स. सो हम इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर कर लो व्हेनेवर द इमेजिनरी स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू -1. ठीक है बच्चों, अब इधर यू डू योर स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप करोगे तो यू विल गेट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाएगा. द i इज इक्वल टू -1. In few examples we find, let me take a pen बच्चों. In few examples you find like having the value 3i, 5i plus 5, 8i plus 9 and so on, many more examples. Here you see I is used to represent imaginary number, so either 3i is also an imaginary number. But when you see in case of 5i plus 5, it is not imaginary number. These are called complex numbers. ये complex number इसीलिए कहा गया है क्योंकि because they include both your imaginary number plus your real number. That is why they are called as complex number. तो मैम अब इसमें इमेजिनरी कौन सा है, रियल कौन सा है? तो देखो बच्चों, 5 हो गया तुम्हारा रियल नंबर एंड 5i हो गया तुम्हारा imaginary number. I hope guys you are clear with imaginary numbers. We will not be going in depth about imaginary numbers in this video. अगर आपको separate video imaginary numbers पे in depth चाहिए तो please do comment in the comment section, and if you like the video please share, subscribe and comment. ठीक है? So these are your imaginary numbers. Now looking forward to what are the next numbers which are not included in real number is your infinity. Infinity क्या होता है? Which doesn't have any end. So you can see this is the symbol of your infinity, and infinity is nothing but something that is larger than the real or natural number. Anything which is larger or greater. Infinity मतलब क्या? Which doesn't have any end. That means which is very great or large, which is not having any end. मतलब 2 is having an end, 4 is having an end. Infinity, does it have any end? No, it doesn't have any end. It is the largest or the greatest which is larger than any other number existing. That is termed your infinity. So real numbers will not include your imaginary numbers and infinity. When moving forward, you may get a question how the real numbers are expressed or defined on a number line. देखो बच्चों, when we move to number line,
देखो, what is a number line? Usually the real number line is just like your geometric line. Geometric line क्या होता है? Any line drawn using geometry is known as your geometric line. Geometric line के ऊपर you keep this values, you keep some values, numbers लगा दो, you'll get your number line. तो अभी हम ये क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? This is our number line. So real numbers can be represented on at any point on the line. Okay, any point on the line is your real number. Okay, the number you could be your whole number, like you have your 7 and everything, or you can have your rational number, you have your irrational number. But students, always remember, we won't find infinity or an imaginary number on the number line. ठीक है बच्चों? Now you can see this is our number line. This is our number line, and a point is chosen on the number line to be the origin. ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वाला होता है हमारा origin. This is called our origin of the number line. Okay, and the points which are towards the left of origin are termed as your negative numbers, and the points which are represented towards the right are called your positive numbers. Hence, students, I guess you are clear with the basic of number line. Now, how are real numbers represented? Now, suppose you take the value of root 2. Take the value of root 2. उसका value क्या हो गया? Some 1.417. It will be something. So where will be that place? Obviously, it is not that it cannot be placed on your number line. नहीं बच्चों, it is definitely placed on your number line. It will be placed somewhere over here. ठीक है? Root 2 का value, it will be somewhere over here. Let me change the pen. Yes. Now, when you speak about pi, अब आपको क्वेश्चन आएगा, मैम क्या पाई भी हम लोग क्या कैन वी रिप्रेजेंट पाई ऑन आवर नंबर लाइन? तो बच्चों, आंसर इज डेफिनेटली यस. पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है? 3.14. सो पाई का वैल्यू हमारा होता है 3.14, which will be over somewhere over here. अब हम कोई भी फ्रैक्शन ले लें. यू हैव 0.5. मैम क्या 0.5 भी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन? Though it is not an integer, it is in decimal, but yet still it can be represented. It will be somewhere over here, 0.5, somewhere over here. It will be your 0.5 on your number line. When you take your negative numbers, you have your pi by 2, minus pi by 2. Where your minus pi by 2, when you calculate the value, it will be somewhere over here. It will be represented somewhere over here. When you speak about minus 2.5, it will be somewhere over here. When you speak about some fraction minus 15.4 or 15.3 or anything, it will be somewhere over here. When you speak about 20 by 9, it will be somewhere over here. है ना? E का value ले लो. E. What is the value of E? You will have some 2.8 some value. Sorry. You will have some value of 2.8. Where will be that place? It will be somewhere over here. So any number which is real can be represented on the number line. ध्यान रखना बच्चों, only real numbers can be represented on number line. Infinity and your imaginary numbers cannot be represented on your number line. And there is one more thing to mention, that is your, let me erase all this. Yes, you have your absolute value. number line का absolute value. मैम अब ये absolute value होता क्या है? तो बच्चों बता दें, absolute value is that which represents the distance, which will be representing the distance of any number from the origin. Okay, number which is at a distance from 0, that is called your absolute value. देखो, for example, if you take minus 5, and 5, now how can you tell the distance between 5 and 0 and minus 5 and 0? You can tell that 5 is 5 far from 0 and minus 5 is also 5 far from 0. देखो, ये हो गया तुम्हारा 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. So there minus 5 is
5 far from 0 and 5 is 5 far from 0. So the absolute value of minus 5 and 5 is what? It is 5. Whereas for 4, let me change the color. When you speak about 4, 4 का कैसे? You can same way. 4 is 4 far from 0 and minus 4 is 4 far from 0. तो 4 and minus 4 का absolute value हो गया 4. ठीक है बच्चों? I guess you are clear with number line. What are the values present on your number line? What is origin? What is absolute value? Now, अब you can get a question. मैम आपने तो इतना सारा बताया नंबर लाइन के बारे में, मगर मैम ये यूज किस लिए किया जाता है? हाउ इज नंबर लाइन यूज्ड? हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस? तो बच्चों बता दें, नंबर लाइन इज ऑलवेज यूजफुल for your addition and your subtraction. To make your addition and subtraction easy, you use your number line. अब कैसे वो हमारा addition subtraction easy बनाता है? Let us check out. चलो then we'll move forward to our next thing. देखो बच्चों, when you want to add any positive or negative numbers on your number line, there are two conditions. देखो, this is your first condition where you have to add two positive numbers. Whenever you want to add two positive numbers, बच्चों ध्यान से सुनना, whenever you want to add two positive numbers, you should always move towards your right side on your number line. देखो, this is your origin, this is your right side and this is your left side. ठीक है? For your reference, I'm telling you. This is your right side and this is your left side. So whenever you want to add two positive numbers, always move towards right of your number line. Example ले लो, you want to add 2 plus 4. You want to add 2 plus 4. This is your 2 and you want to add 4. Move 4 towards your right side on your number line. 1, 2, 3 and 4. So the value of 2 plus 4 is 6. In the same fashion, if you want to add two negative numbers, this is your second condition बच्चों. When you want to add two negative numbers, remember always you have to move towards left of your number line. ठीक है? Always move towards your left of the number line when you want to add two negative numbers. Example, you have 3 plus minus 5. Solve करो. 3 minus 5 कितना होगा? 3 minus 5. बच्चों देखो 3 हो गया हमारा इधर. Move 5 places towards left on your number line. 1, 2, 3, 4, 5. So value of 3 minus 5 is minus 2. Isn't that simple and interesting? How to solve? How easily you have solved addition using your number line. चलो बच्चों, in the same fashion we will look after how we subtract. Let me clear the screen. Yeah, how we subtract two positive numbers and two negative numbers on our number line. देखो बच्चों, how we had two conditions for adding positive numbers and negative numbers on number line. In the same fashion we have two conditions for subtraction. So let us look into the first condition. See, whenever you want to subtract two positive numbers on your number line, always move towards left on your number line. Addition of two numbers में क्या था बच्चों? We should move towards our right of the number line. Subtraction में we have to move towards the left of our number line. कब? When you want to add two positive numbers. Remember students, when you want to add and subtract two positive numbers, addition में move towards right, subtraction में move towards left. Now you have your example. ले लो 5 plus minus 6. You want to subtract 5 minus 6. 5 कहाँ है? 5 इधर ले लो. Move towards your left for subtraction. Move towards your left for subtraction. Move करो. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the value of 5 minus 6 is minus 1. Wasn't that so easy and quick to learn? Yes,
In the same way, we shall look after the subtraction for negative numbers. So when we move to the subtraction of negative numbers, देखो बच्चों, whenever you want to subtract two numbers, what you have to do? What you have to do? जैसे पॉजिटिव का करा था वैसे ही नेगेटिव का करेंगे ना. नेगेटिव में ऐड करना है टू नेगेटिव नंबर्स को, तो व्हाट वी डू, वी मूव टू लेफ्ट. सब्ट्रैक्शन क्या होगा? क्वाइट ऑपोजिट. व्हेन यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू नेगेटिव नंबर्स, ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ योर नंबर लाइन. लेट मी चेंज द कलर. अब है एग्जांपल ले लो, -4 माइनस ऑफ -7. इट विल बिकम -4 प्लस 7. आंसर क्या होगा? -4 plus 7. This is your -4. Move 7 places. 1 towards your right. Yes, this is your right. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So answer is +3. Wasn't that so simple? So बच्चों देखो, whenever you want to add or subtract on number line, always remember these 4 conditions. This will help you very much, very easily to subtract and add numbers on your number line. For you, let me repeat the conditions once again. Adding two positive numbers, always move right towards right of your number line. When you want to subtract two positive numbers, always move towards left of your number line. When you want to add two negative numbers, always move to left of your number line. And when you want to subtract two negative numbers, always move towards right of your number line. I hope you are clear with this concept. Next, moving on to the next topic, we have our HCF and LCM. We know HCF is the highest common factor and LCM is your least common multiple. अब देखो, here are two methods to find HCF and LCM. We usually have two methods which we can use to find HCF and LCM of given numbers. The first one will be your prime factorization method and second one will be your long division method. Now let us learn both the methods one by one. When we look after your prime factorization method for HCF, suppose take an example, we need to find the highest common factor of 36 and 48. Now let us write the prime factors of 36 and 48. So 36 का prime factor क्या होगा? See, 36 goes into 18 times, 18 goes into 9 times, 9 goes in 3 times and 3 goes in 3 1 time. So 36 का prime factors क्या होगा? 10. 2 square into 3 square. This will be your prime factors for your 36. In the same fashion, 48 का solve करो. 48 will go into 24 times. 24 will go into 12 times. 12 will go into 6 times. 6 will go into 3 times. And 3 will go in 3 1 time. So what is the prime factors for 46? It is 2 power 4 and 3. ये तो हमें पता चल गया. Now what we have to do? We have to look for the common factors of 36 and 48. Now common factors of 36 and 48 are what? 2 power 2. Okay, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. This is what you have your common factors. Now from this, what are your common factors? You'll have 2 into 2 and 3. 3 will be left out. 2 into 2 will be left out and 3 will be left out, right? 3 will be left out. How, ma'am? देखो, least number लेना है. 2 power 4 and 2 power 2 में least is 2 power 2. 3 power 2 and 3 में least is 3. So the prime factors of 36 and 48 will be your 2 power 2 into 3. Product करो. 2 into 2, 4. 4 into 3, 12. So 12 is the prime HCF of 36 and 48 using the method
prime factorization. Now we will look after the next one, that is long division method to find the HCF. Okay, always remember when you do long division method, always larger number is divided by a smaller number. Okay, always the larger number is divided by a smaller number. When you come across division, in division we will see the relationship between dividend, divisor, quotient and remainder. So whenever the number, now let me make you clear with the terms dividend, divisor, quotient and remainder, because it is very useful in the further topics. So the number which we divide, okay, the number which we divide is called our dividend. Okay, डिविडेंड किसे कहते हैं? द नंबर विच वी डिवाइड, जो नंबर डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर. मतलब डिवाइजर वो होता है जिसके द्वारा डिविडेंड इज गेटिंग डिवाइडेड. अब एग्जांपल ले लो 30. फाइंड द HCF ऑफ 30 and 18. 30 is the largest number, so larger number is divided by smaller number. तो ये हो जाएगा हमारा divisor. This is our divisor and 30 is our dividend. And the result which is obtained is called the quotient. Result ये होगा ना, the result which is obtained is called our quotient. And the number which is left over is called our remainder. ये हमारा हो जाएगा remainder. So long division method हम क्यों करते हैं? We go to long division method in order to get the remainder as 0. I think I'm clear with this. Okay, so here when you look after this, when you divide 30 by 18, when you divide this 30 by 18, 18 goes in 30 one time, you get 18 and remainder is 12. See, look over here, we are not getting remainder as 0. So what happens? Our remainder will become our next divisor and 18 will become our next dividend. देखो 18 is our first divisor over here. Okay, अभी हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए ये 12 क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइजर बन जाएगा. और ये जो 18 है वो हमारा बन जाएगा क्या? डिविडेंड. Okay, and next the process continues. When we again divide 18 with 12, 12 goes in 18 one times, 12 and remainder फिर से हमारा क्या आया? 6 आया है. Again you see we are not getting the remainder 0. So क्या होगा बच्चों? 6 again will become your next divisor. And जो इधर हमारा divisor है वो बन जाएगा हमारा next dividend. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा next dividend. Now again divide. 6 divides 12 two times. हमारा remainder क्या आया? We got the remainder 0. इसका मतलब क्या? Remainder is always. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? Remainder is always 0. We should divide until we get remainder as 0. तो ये हो गया हमारा problem solve. अब HCF क्या होगा? देखो बच्चों, whenever we perform long division and whenever we get 0, उसका जो divisor होता है वो बन जाता है हमारा HCF. Okay, that becomes our HCF. So HCF of 36 and 48 is our 6. Okay guys, I think you are pretty well introduced with the two processes, that is two methods of solving HCF, that is prime factorization and long division method. Now next, moving forward to prime factorization method of LCM. अब LCM में कैसा होता है prime factorization? So when we do, in order to calculate the LCM of any two numbers, here we have three numbers. We have taken an example of three numbers. 48 है हमारा, 72 है और हमारा 108 है. Okay, we have 42, 78 and sorry, this was 72. 48, 72 and 108 है हमारा
So how will we calculate the LCM of these two numbers? देखो, out of other ways, one way to find LCM is given number is like list the prime factors of each number first and then multiply each factors and then you'll get the LCM. Okay, that is your prime factorization method. This is what we are going to do in prime factorization method. तो अभी हम क्या करेंगे? We'll list the prime factors of each number. First 48 का हमने prime factors निकाल लिया, 72 का हमने निकाल लिया, 108 का निकाल लिया. अब 48 का हमारा आ जाएगा 2 power 4 into 3. 72 का है 2 power 3 into 3 power 2 and 108 का है हमारा 2 power 2 into 3 power 3. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर्स. अब हमें क्या करने हैं? वी नीड टू मल्टीप्लाई ईच फैक्टर एंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन एनी नंबर. इसका मतलब क्या है बच्चों? कि वी नीड टू फाइंड द अकरेंस ऑफ नंबर. कॉमन फैक्टर जो है विच इज रिपीटेड 2 times 3 times, उन्हें हमें निकालना है और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम हमारे सामने. तो अब इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है. So what is our prime factor? Sorry, LCM for this. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 8 3 हो जाएगा ना 72. So this is how we will find the LCM of prime factor by using prime factorization method. When we look after the next topic, that is finding LCM using your long division method. देखो ये हो गया हमारा long division method. Okay, this is our long division method. This is our long division method. So let us see with an example which we how we will use this long division method to find LCM. Okay, using prime factorization. By using prime factorization we already seen. Now we will see by using long division method. So इसमें क्या होता है? देखो हमने लिख दिया example है 1624. We have a 36 and we have a 54. तो हमने इसका इधर when we divided it हमें मिल गया इसका factors. We found the factors of this long division method. अभी हमें क्या करना है? लिखना है इसे 2 into 2 into 2 into 3 into 3. मैम मगर इधर तो 2 है और एक्स्ट्रा 3 है, ये दो कहाँ से आए? तो बच्चों इधर हमारा 2 और 3 लेफ्ट आउट है ना, उसे हम इधर लिख देंगे. When we multiply we get answer as 432. This is the LCM of our long division method. ठीक है, long division method यूज करके हमें जो मिलता है आंसर वो हमें हमारा LCM होता है. Next we will move to the topic Euclid's division lemma. Euclid's division lemma होता क्या है? Euclid's division lemma देखो बच्चों, Euclid division lemma is nothing but it is just used to find the HCF. HCF हमने बताया it is the highest common factor. HCF is also known as your GCF. ठीक है, greatest common factor of two positive integers. Example देखो आपके पास 215 flower pots है and you have 1290 flowers है आपके पास. Okay, ठीक है, आपके पास flowers है. Now what will be the maximum number of flowers in each pot? अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है मैम आपने बताया 215 pots है and 1290 flowers है. अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमें बताओ कि what will be the maximum number of flowers in each pot. कैसे फाइंड करेंगे? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 1290 एंड स्मॉलेस्ट इज 215. डिवीजन करो 1290 डिवाइड बाय 215 कितना आएगा? 215 goes in 1290 6 times. हमें कितना आएगा? 1290. हमारा रिमाइंडर क्या है? We get remainder 0. So when you want to express the same thing in a form of equation in the sense, let me erase this. Yeah, yes,
So whenever you want to express the same thing in the form of equation matlab dividend. Let me write it in a shorter form. Yes, it is dividend is equal to divisor plus quotient plus रिमाइंडर. मतलब ये हो गया हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन. तो पहले जो हमने डिवाइड किया था ना 215 डिवाइड बाय 1290, हमें क्या आया था 6 और 1290 रिमाइंडर आया था 0. उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1290 हमारा हो जाएगा डिविडेंड, 215 हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 6 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0. So the same thing can be expressed in form of equation using d is equal to d plus q plus r, that is dividend is equal to divisor plus quotient plus remainder. Now अब हम इधर देखे हैं a is equals to bq plus r. Now what is a bq plus r? It is nothing but your Euclid's division lemma. And what does lemma is? Nothing but it is a theorem. Lemma means nothing but theorem. And what does our Euclid division lemma state? If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r, और कंडीशन दिया है where 0 is less than equal to r and r is always less than b. देखो, let me clear the screen for you guys. Yes. See, students, देखो, when we talk about Euclid's division lemma BQ plus R, ये तो हो गया हमारा डिवीजन लेमा का कंडीशन, ये सेटिस्फाई होना चाहिए. इसमें क्या है, B हो जाएगा हमारा डिवाइजर एंड R हो जाएगा हमारा रिमाइंडर. दिस इज आवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इधर और एक क्या है, B इज डिवाइजर है एंड इफ R इज बिगर देन B. ठीक है, अगर हमारा कंडीशन है, इधर हमारा कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. मतलब क्या है, R should always be smaller than B. ठीक है, अब अगर हमारा B is greater than R तब क्या होगा मैम? देखो बच्चों, B हमारा डिवाइजर होता है एंड हमारा R अगर B से ज्यादा बड़ा हो तो which means that the number can be further divided. ठीक है, अगर 125 है, डिवाइड बाय सम नंबर ले लो 1290, सपोज 7 लिख लो, 890 कुछ भी, एंड यू गॉट ग्रेटर देन दिस. ओके, 125 से रिमाइंडर इज ग्रेटर. इसका मतलब क्या है, दिस इज 3 to 5 will be further divided. ठीक है, the division will be further, that the number can be further divided, है ना? When we don't get a 0, it means that it simply implies that the number is further divided. इसीलिए बच्चों R should always be smaller than B. When R is smaller than B, there is no chance of getting the number divided again. ठीक है, hence this equation that his state which is shown over here states the Euclid's division lemma, that is given two positive integers a and b, there always exist unique integer q and r which will be satisfying the given equation. ठीक है, that is why Euclid division lemma में हमेशा 0 should be less than equal to r or less than b. Now let us take an example. देखो, अब हमारा है 27 है, 8 है, हमारा 27 हो जाएगा हमारा डिविडेंड, 8 हो जाएगा हमारा डिवाइजर और 3 होगा हमारा क्वेश्चन एंड ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. अब इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 को द सेम थिंग वी विल राइट इन इक्वेशन फॉर्म. दिस इज d is equal to d into q plus
R. Okay, this is our dividend, 8 is our divisor, 3 is our quotient and 3 is our remainder. ये हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट यही है ना, ऊपर जो एक्सप्लेन किया था, a is equals to bq plus r where 0 is less than equal to r and where r is always less than b. ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे तो we will get our equation in this form, that is 27 is equal to 8 into 3 plus 3. This will give our Euclid's division lemma. Most of you क्या होता है, get confused between Euclid's division lemma and Euclid division theorem. ठीक है, let me explain you what is the difference between our Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Euclid's division lemma क्या होता है, we have our a is equal to bq plus r. ये हो गया हमारा Euclid's division lemma and we use this in algorithm. Okay, a is equals to bq plus r. Euclid division lemma जो है we will be using this in our algorithm. कब तक यूज करेंगे मैम, पूरी जिंदगी तो नहीं यूज करेंगे. नहीं बच्चों, जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम्स में यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज a is equal to bq plus r and we use this division lemma in algorithms until we get remainder 0. ठीक है मैम, आपने तो बता दिया कि ये 0 आने तक हमें ये यूज करना है, मगर ये कब यूज करना है मैम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो बच्चों बता दें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ nothing but it is a series of well defined steps which gives procedure for solving problems. ठीक है, suppose you want to find HCF by using Euclid's division lemma. तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे तो नहीं चले जाएंगे ना, उसके लिए एक सर्टन सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स रहता है, एक डिफाइंड प्रोसीजर रहता है. वो प्रॉब्लम HCF को सॉल्व करने के लिए एक डिफाइंड प्रोसीजर रहता है. उस प्रोसीजर को, उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. Suppose we have given two numbers. Okay, this is what is our Euclid's division lemma. It is nothing but it just states the process of finding the HCF of two numbers using Euclid's division lemma is called a Euclid's division algorithm. ठीक है बच्चों, suppose we have given two positive integers tell to 320 and 132 and we are told to find the HCF of 320 and 132. Now how will you find the HCF? देखो, Euclid's division algorithm is, just now I told, it is just a technique to compute the highest common factor of two given positive integers. Now with this example we will see how the algorithm works. Suppose here I told we need to find HCF of the integers 320 and 132. So we start with the larger integer, that is 320. ठीक है, जो है 320. We will divide it by 132. ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा. उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट स्टेप डाल दिया. फर्स्ट स्टेप से क्या आया, यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा वी सॉल्व्ड आवर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या है, 320 is our dividend, 132 is our divisor, 132 is our divisor, 320 is our dividend. ये 2 हो गया हमारा क्वेश्चन एंड 56 हो गया रिमाइंडर. ओके बच्चों, सो 132 320 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, हमें रिमाइंडर मिला 56. मगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन क्या है, वी नीड टू अप्लाई इट इन एन एल्गोरिथम अंटिल वी गेट रिमाइंडर 0. तो अभी हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है. इसलिए व्हाट वी डू, वी फर्दर डिवाइडेड. फर्दर डिवाइडेड ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब हमारा आएगा सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या है बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर विल बिकम योर डिवाइजर. नेक्स्ट डिवाइजर हमारा रिमाइंडर बनेगा और जो पहला डिवाइजर था वो हमारा अगला डिविडेंड बनेगा. तो देखो इधर हमने लिख लिया, लेट मी चेंज द पेन. इधर हमने देखा 56 इज आवर नेक्स्ट डिवाइजर एंड 132 इज आवर नेक्स्ट डिविडेंड.
डिवाइड किया, रिमाइंडर 20 आया, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, carry on with the process, again divide 20, remainder becomes our new divisor, 56 becomes our new dividend, divide करो, again we get reminder, 16 आया हमें रिमाइंडर, फिर भी 0 नहीं आया। so what happens, 16 हमारा बनेगा हमारा नया डिवाइजर, 20 बन जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड, और रिमाइंडर आया हमारा 4। 4 is still not the complete आंसर, तो क्या 4 कैन बी फर्दर डिवाइडेड, सो 4 क्या हो जाएगा हमारा बन गया अगला डिवाइजर, और जो पहला हमारा डिवाइजर था वो बन गया हमारा डिविडेंड, देन डिवाइडेड, यू विल गेट आंसर एज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों अब जब आंसर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा बच्चों, इतना कुछ नहीं है इसमें, HCF हमारा होगा बच्चों 4। कैसे मैम, हमने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज carried out in an algorithm until we get 0, और जब भी 0 आता है उसका जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है हमारा HCF का वैल्यू। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, types of numbers, how real numbers are expressed on number lines, what is the use of number line, addition subtraction का conditions, I hope आपको समझ में आया होगा। next we have learned our HCF and LCM, process of solving HCF and LCM, एक था prime factorization method, एक था long division method, and next हमने देखा what is Euclid's division lemma, फिर हमने देखा what is Euclid's division algorithm, and we have also seen the difference between Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm। बच्चों मैं एक और आपको शॉर्टकट बता दूं, how to identify the divisor and dividend। मैम आप तो डिवीजर डिवाइडेंड बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हो, मगर हमें कैसे समझ में आएगा मैम कि कौन सा डिवाइजर है और कौन सा डिविडेंड है। तो बच्चों हमेशा याद रखो, whenever you see the divisor and dividend कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड का मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, डिविडेंड हैज मोर लेटर्स, डिविडेंड में जब भी आप देखोगे इट हैज मोर लेटर्स, ठीक है। सो बिगर नंबर इज डिविडेंड, देखो डिविडेंड हैज मोर नंबर मोर लेटर्स, और हमारा जो डिविडेंड बनता है वो भी ज्यादा नंबर रहता है, ठीक है। 320 हैज ग्रेटर नंबर एंड डिविडेंड आल्सो हैज लार्जर letters, has more letters, so you can compare dividend in this way। और डिवाइजर में क्या होता है, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, बहुत कम लेटर्स के अक्षर होता है। डिवाइजर इट इज अ स्मॉल वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, एंड हमारा जो डिवाइजर बनता है वो भी छोटा ही रहता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई डिवाइजर एंड डिविडेंड इन such a way you need not get confused between what is dividend and what is divisor। I hope you are fine and okay with this video। I guess आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा बच्चों। Till then keep watching, keep learning and stay tuned at Veena's EduGrade। Thank you friends।